चल पड़ा अभी शुरू अभी हुआ होगा ना। उनकी रिटायरमेंट है ना। CSIR-CDRI or win the call.
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CDRI स्टाफ क्लब के इस मंथली फेयरवेल कार्यक्रम में। आज अभिनंदन और सम्मान समारोह हमारे दो विशिष्ट सदस्यों का होना है। नीरज जी का दोहा है कि सिर्फ बिछड़ने के लिए हैं ये मेल मिलाप, सिर्फ बिछड़ने के लिए हैं ये मेल मिलाप, एक मुसाफिर हम यहाँ एक मुसाफिर आप। तो दो ऐसे ही मुसाफिर जिन्होंने एक लंबा वक्त बिताया CSIR में, उन दो मुसाफिरों का आज हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उनके जो आगे की इनिंग है वो अच्छी हो इसकी कामना भी करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर राम विश्वकर्मा सर को। कृपया आप मंच पर पधारें। डॉक्टर राम विश्वकर्मा सर, आप लोग तालियों से अभिनंदन करें CDRI के विशिष्ट वैज्ञानिक डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट डॉक्टर राम विश्वकर्मा जी का। साथ में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में आज मौजूद डॉक्टर R रविशंकर सर को। कृपया आप भी मंच पर पधारें। और साथ में आमंत्रित करना चाहता हूं FAO दिनेश कुमार जी को कि आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। और आज के जो दो विशिष्ट हमारे सदस्य जो आज हमसे विदा ले रहे हैं, हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं। 33 वर्षों की सतत सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हमारे सीनियर COA साहब आदरणीय पंकज बहादुर जी को मैं आपके तालियों के बीच में मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। अलग अलग कई संस्थानों में रहे और बहुत सारी संस्थाओं को अपनी सेवाएं दी, पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं CDRI के उस व्यक्ति को। पंकज बहादुर जी ने CDRI को चलाया, लेकिन सुखदेव जी ने CDRI को खिलाया। खिलाने वाला व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सुखदेव प्रसाद जी को, वो भी आए मंच पर। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने, मैं कई वर्षों से संचालन कर रहा हूं, 42 वर्ष की सेवा मैंने पहली बार देखी है, जो 42 वर्ष तक CDRI में रहे। एक जगदीश जी कह रहे थे कि आज CDRI की रोजी रोटी दोनों विदा हो रही है। रोजी का मतलब था एडमिनिस्ट्रेशन से और रोटी का मतलब था सुखदेव प्रसाद जी से। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आदरणीय प्रोफेसर तपस कुंडू सर, हमारे पूर्व निदेशक, वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं और हम उनको कुंडू सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार वो ताली बजा दीजिए जिससे सुनाई पड़े कि बहुत बहुत आभार सर ऑनलाइन जुड़ने के लिए। और आपकी उपस्थिति जब भी होती है तो माहौल ऊर्जामय हो जाता है, लगता है कि बहुत सारी ऊर्जा किसी ने माहौल में घोल दी हो, ऐसा महसूस होने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और CDRI का एक ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, दूसरे ने CDRI का भोजन संभाला, तो बहुत बड़ा अद्भुत आज ये फंक्शन होने वाला है। और इस फंक्शन की जो आगे की कार्यवाही है, आज दो संचालक हैं। एक पुराना नियम जो एक सिंगल संचालन वाला चल रहा था, वो उसको भी आज तोड़ा गया है। तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन करके और बहुत ही खूबसूरत जिनका लहजा है, बोलती हैं, बहुत अच्छी जिनकी कलाएं हैं, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कमला कंडपाल जी को आगे की कार्यवाही के लिए। आप लोग ताली बजा करके पहली बार उनका मंच पर स्वागत करें। थैंक यू पंकज जी। सभी को मेरा नमस्कार है। आदरणीय विश्वकर्मा साहब, कुंडू साहब, सीनियर COA सर, सुखदेव जी और प्रोफेसर कुंडू सर, और यहाँ पे सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले मैं जो हमारे रिटायर हो रहे सदस्य हो रहे हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ कि आप एक ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि इतने वर्षों की जो उन्होंने सेवा करी है संस्थान के लिए, जिसमें उन्होंने ना अपना परिवार देखा, ना सिर्फ पूरे मेहनत से काम किया। ये बात हमको बिल्कुल नहीं भाती है, ये बात हमको बिल्कुल नहीं भाती है कि 60 की उम्र इतनी जल्दी क्यों आती है। जैसे लगता है कि अभी अभी तो हमने अपनी सेवा शुरू की थी और इतनी जल्दी सर्विस छोड़ के हमें जाने का समय आ गया है। लेकिन ये चली चले की बेला है, उसमें किसी का बस नहीं चलता है। हर एक व्यक्ति के सामने ये दिन आता है कि उसको सेवानिवृत्त होना पड़ता है। तो चलिए पहले मैं सेवानिवृत्त हो रहे साथियों का स्वागत करने के लिए सर को विश्वकर्मा साहब को आमंत्रित करूंगी कि वो उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें, तुलसी का पौधा देकर।
ये सर तुलसी अपने आंगन में लगाएंगे और जैसे जैसे ये बढ़ेगा सर को हमारे CDRI परिवार की याद आएगी। हाँ थैंक यू सर। सुखदेव जी। थैंक यू सर। आज हमारे बीच से जो दो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, दोनों लोगों को लोग अच्छे से उनको पहचानते हैं कि कौन है, क्योंकि सारे काम सर सही होते हैं और कैंटीन में भी जाके लोग चाय है या लंच है सबके लिए सुखदेव जी के पास ही जाते हैं वहाँ पे कैंटीन में। और सर के व्यक्तित्व, मैं सर के एक्चुअली पर्सनल स्टाफ से भी हूँ, तो सर के बारे में मैं कुछ थोड़ा पहले बोलना चाहूँगी कि सर ने जो है यहाँ पे अगस्त में ज्वाइन किया था CDRI में। और यहाँ पे जब सर आए थे तो पहले आते ही सर से जो टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन हमारे साथ हुआ था, उसमें सर के साथ ये था कि हमारे इंस्टीट्यूट का क्या मतलब ओपन होना है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स से या बंद होगा ऑफिस, ठीक है। तो उसमें जो है तीनों जो लैब है हमारी उनसे बात करी गई, तो उनमें से सबने कहा कि आज ऑफिस बंद होगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। हेडक्वार्टर से बात करी गई, उन्होंने भी कहा आज ऑफिस बंद होगा। लेकिन सर से हमारी बार बार बात हो रही थी तो सर कहने लगे इस OM के हिसाब से इंस्टीट्यूट ओपन होना है। लेकिन काफ़ी बहस हुई, फिर ये हुआ कि बंद होना है। फिर हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया, नहीं इंस्टीट्यूट ओपन होगा। तो सर से भी बल्कि मैंने कहा कि सर आपको मान गए, आपकी मतलब बुद्धिमत्ता इतनी है कि क्या सब लोग ने कहा बंद करेंगे, लेकिन आपने कहा कि इंस्टीट्यूट ओपन रहना चाहिए। उसके अलावा सर का मैनेजमेंट काउंसिल में भी काफ़ी, जब IIM में थे सर तो वहाँ से हम लोग ने सर से काफ़ी मदद ली। इससे पहले हमारे वहाँ के IIM जम्मू के विश्वकर्मा साहब थे, तो वो भी बोले थे कि हमारे जो कंट्रोलर हैं पंकज सर, उनसे बात कर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट MC हुई, उसमें रेड्डी सर IIM जम्मू से थे, तो वो भी बोले कि आप जो है हमारे कंट्रोलर हैं उनसे पूछ लो। तो फिर उसके बाद जब कुंडू साहब थे फिर नेक्स्ट MC में, तो वो बोले कि हम अपना कंट्रोलर आपके वहाँ भेज रहे हैं CDRI। तो इसकी बहुत हम लोग को खुशी हुई कि हमें ऐसे एक महान व्यक्तित्व की यहाँ पे वो मिला, उनके अनुभव का लाभ मिला। इसके साथ ही संसार से रिश्तों की डोर बंधी थी, उसके खुलने का समय आ गया। जिस काम से नाम हुआ उस काम से अब आराम का समय आ गया। अब सर का मैं विश्वकर्मा साहब को आमंत्रित करूंगी कि वो यहाँ पे आएँ और सर से अपने जो यादगार उनके साथ क्षण बिताए हैं वो हमसे साझा करें। विश्वकर्मा साहब। Good evening, everybody. It's a very special day for me. Sometimes, things happen which you can't connect. Both these two people sitting here have something sort of personally related to me. So I'll talk about each of them. Pankaj ji, of course, was with me for many years, maybe more than 5-6 years. As controller of administration in Jammu, and having a good COA, a good person at the helm of administration is the real asset for director, because
any institution you have, whether CDRI or any other CSR or any government organization, there are two phases of the institute, where is the one is the functional phase, where you have to provide your energy for science, interaction with scientists, interaction with funding agencies, central agencies, international agencies, so that your institutional science translation profile goes up. That's half of the job of director. Half of the job is director to keep the family happy, keep everybody happy, take care of your own people. And Jammu being located, divided into two institutions, Jammu and Srinagar. Many people don't know that there are two campuses, 6 experimental stations, is a very large asset in a state of spread over all over J&K and Ladakh. And there are people everywhere. And the people with different cultural background and different, speaking different languages. And of course, politically, historically, a volatile place which is unpredictable, and having a solid administration, solid cohesiveness of the staff, people. And as CSIR everywhere, CSIR is a truly integral organization in the sense of people from all over the country will be present in any institution you go. And particularly in J&K and that institution, I personally followed that more rigorously so that to represent all the people from everywhere from the country. And I think that's where I got this huge support, because I was struggling for many years to get good support from administration. And when he came, and I think that was something provided me more time to focus on things which director should focus. And then I actually started learning from him a lot of things about. So one thing I think we both of us discovered is, and I think at people who work in administration, is that have patience about decision making. Do not rush into decisions about any issue. Sleep over certain decisions, and I think sometime then a perspective comes and you learn about lot of other things. कि अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया तो आपको बाद में पता चलता है कि अरे total 360 degree perspective इस पे नहीं आया, because every decision that you take involves human beings and it has effect. So बहुत सोच समझ के. And then of course quality documentation, dealing with legal issues, dealing with administrative issues. And I think that's where I discovered his real quality, which was, because sometimes we think that we know the best, but then I realized his real acumen about documentation, writing things in a way which stand test of the time at different level of scrutiny. And I can give you a couple of examples, whether he may not told you, I tell you. In 2 or 3 cases, the notes that he wrote in certain matters were literally copied by tribunal, central tribunal in Chandigarh and J&K High Court in inverted commas, and the decisions that were given, which is very rare thing for judiciary, because that means you didn't find any fault with even comma, full stop, semicolon, because everything matters in legal matters. And then judgment that came to institute, because normally in a judicial process in our country, the most of the time government is on the losing side. This is the trend so far, particularly in the personnel matters or the CAT or something. But 2 or 3 times, so I think that's a quality of understanding of the rules, regulation, and moreover to provide those responses in correct terms. Many cases, like you referred, my colleague referred to, dealing with headquarters, dealing with other institutions. And I think it was a very fabulous period for both of us in that place. Initially he has a lot of apprehension कि कैसे करेंगे, difficult place है ये. So don't worry, destiny has brought you here, because wherever we go, I believe that there is a purpose of wherever you go. Whether that purpose you are able to see or realize, that's a different issue. So that was and I think when he was leaving from there, then he told me that now I'm much better. I told him in the beginning that, this is also part of our country. That part of the country is dealing with different set of problems. So there is a learning here. If you stay in one place forever, like, sit here and have a perspective about, say, Northeast, perspective about, your perspective is very different than when actually live and work among those people. Understand their problem, their approach. So I think that was, a positive side that
he must have gathered, and I think slowly that also helps, that those getting opportunity to work in a diverse set of people, it's also a learning, very important learning. So it was a great, so I think I am lucky to be here and privileged to saying few words about him. And then I have been, all along have been very good friendly relationships whenever there are matters, now, earlier, and I think Tapas also will vouch for me that we were discussing about that why he could not come earlier. I've been prodding him to go now because but it was required because there was a transition period there also, and transition period you need really people who can guide new sort of incumbent to right direction, because whatever you learned in the first impression is mostly wrong. That's what my experience. So it's always give it time and space, then you understand about the place. So I think it's a lot of quality, and I personally cherish his advice, his association, and as a colleague. And fortunately, then I had few opportunity to see his children growing up. Two of them are here, and they spend good time there. I think once I had privilege to have food made by his wife, I still remember. And we had excellent food in your house, our house there. So it's good to see that family back here. So this is my privilege, and I really wish him a good, healthy life and productive. And I don't consider this as a next step. This is all just one step, and you don't know what is there on offer. Provided that we keep on exploring that. So lot of contribution, people like that, what you learn in these many years is huge reservoir in your mind. It's very, very, very important learning, and I think this is for younger people to use their expertise, learn from them, and I think that is how the continuity of the system runs. So this much about Pankaj ji. Thank you very much for whatever you did. Many times, literally, he rescued me from a lot of problems, and I can't tell you this. It's a director's secret. Okay, so now the second person who is superannuating today is also very specially, for me, is very special. He may not realize that. When I joined this institute as a student here, it was 1981. And we used to live in Moti Mahal in those days. There was no hostel here. And the morning breakfast I used to have through him in the building, the back side of the building of Chhatar Manzil. And I still remember those jalebis I used to get in the morning. I don't know whether you make those jalebis today or not. हाँ, तो मैं जब सन 81 में मैंने यहाँ पर एज ए JRF ज्वाइन किया, तो मैं मोती महल में रहता था, और मोती महल से सवेरे हम लोग वहाँ पर से आकर के पैदल आके 7:30 पे आ जाते थे हम लोग, तो आपका ब्रेकफास्ट करते थे, और आप एक अच्छी किस्म की कोई जलेबी बनाते थे। तो वो मुझे हमेशा याद रहती है कि वो जलेबी जो मुझे वहाँ मिलती थी, अब उस टाइम में जो भी आके तो ब्रेकफास्ट करके 7:30 बजे फिर हम लोग अपनी लैब में जाते थे। एंड उस टाइम में जो हम लोग सबसे पहले पहुँचते थे, हमसे पहले एक ही आदमी होता था वहाँ पर, हम लोगों से पहले डॉक्टर CM गुप्ता, वो बैठे रहते थे। सो वी यूज्ड टू ऑलवेज वी आर नंबर 2 टू रीच द लैब। वो सबसे पहले आ जाते थे, वो अपना टिफ़िन ली, मुझे याद है करके, वो हम लोगों के ऊपर वाले फ्लोर पे होते थे। तो दैट वाज द कल्चर। फिर हम लोग दोपहर में चाय पीने करके, तो ये दिस वाज ए लाइव सोर्स, क्योंकि पैसे उतने होते नहीं थे। आप लोगों को सरप्राइज होगा कि 500 रुपये 600 रुपये महीने फेलोशिप मिलती थी, 600 रुपये ऐसे कुछ मिलती थी। तो हम लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते थे 20 तारीख तक। तो फिर हम लोग पूल करके पैसे करके हक साहब से बोरो करके इधर उधर से करके फिर हम 5-6 लोग मिलके अपना वो 5-6 दिन का काम चलाते थे, चावल बॉयल ऑयल करके खाते पीते रहते थे। तो ये कैंटीन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सब्सिडाइज थी, और बड़े अच्छे से हम लोगों को वहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलता था। तब से मुझे याद है। तो जब अभी भी मैं CDRI आता हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वो उधर का दृश्य आ जाता है कि तो बिकॉज एक हॉस्पिटैलिटी, व्हेन यू कम फ्रॉम ए हॉस्टाइल सिस्टम, people don't realize when you work in these institutions, these are islands of peace. अगर इस चीज़ को आप realize कर लो, तब आपको पता चलेगा how fortunate you are. Nobody can be more fortunate. I am telling you all my experience working here, all the places. We are very, very privileged that we work in these institutions of knowledge, science,
and we are paid for to improve ourselves. There is what is the expectation? There is no other profession where you are paid handsomely to just improve yourself and create new knowledge. And ऐसे में sometime हम लोग ignore कर लेते हैं कि who are those people जो हमें ये environment provide करते हैं, peaceful environment, एक cup of tea और एक जलेबी मिल गई वहाँ पर, एक बच्चे को नाश्ता मिल गया, ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अदरवाइज़ आप बाहर जाके ज़रा किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके देखिए आप, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का इन्वायरमेंट होता है। इवन अच्छे आप डिपार्टमेंट में चले जाइए, एक हॉस्टिलिटी सी आपको दिखती है कि जल्दी से यहाँ करके निकल जाओ यहाँ से। और ये जो जगह हैं यहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ी देर और ठहर जाएँ, यहाँ पर थोड़ी देर और रुक जाएँ, बात कर लें लोगों से। तो ये कौन मेंटेन करता है? ये यही मेंटेन करता है। तो ये भी एक अच्छी साइंस जो होती है उसका मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मानता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरी पर्सनल जो मुझे जब आपको देखा, मैंने नाम देखा तो मुझे याद आया। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे एंड विश यू ऑल वेरी हेल्दी हैप्पी फ्यूचर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एकदम सही बात आपने कही है। भूखे पेट रिसर्च न होई, पेट पूजा बहुत ज़रूरी होती है। और सुखदेव जी के बारे में बहुत सारी बातें आपने बताई। ये कहा करते हैं अक्सर कि तुमको पता नहीं है, मैंने जिसको खाना खिला दिया ना वो बड़ा बड़ा डायरेक्टर बन गया। तो आज प्रूफ हो गया, आज बिल्कुल साबित हो गया कि आपने खाना खिलाया तो आप डायरेक्टर बन गए। सीएम गुप्ता जी भी डायरेक्टर बन गए, जाने कितनों को इन्होंने डायरेक्टर बना दिया खाना खिला करके। अच्छा, पंकज बहादुर जी और ये दोनों लोग बहुत ही कट्टर ईमानदार अपने प्रोफेशन के प्रति। पंकज बहादुर जी की बात करें तो मजाल कि कोई 1 रुपया भी ज़्यादा CDRI से ले सके, कोई ले ही नहीं सकता। और सुखदेव जी के मजाल कि कोई 1 रोटी भी फालतू अपने उसमें प्लेट में डाल सके, बिल्कुल नहीं डालने देते थे। कहते थे जाओ कूपन कटा के आओ तब मेरे पास आना। तो शायद यही ईमानदारी ही आपको बड़ा बनाती है और विशेष बनाती है। हमारे बीच में निदेशक जुड़े हुए हैं सीमैप के, डॉक्टर प्रबोध त्रिवेदी सर। आपके लिए एक बार जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निदेशक सीमैप डॉक्टर प्रबोध त्रिवेदी जी जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने उद्बोधन के लिए ऑनलाइन जुड़े हुए प्रोफेसर तपस कुंडू सर को। तपस कुंडू सर कहते थे कि 2 पंकज हमारे इंस्टीट्यूट में हैं, एक फूल है और दूसरा बहादुर है। तो तुमको तो मतलब फूल तो मसला जाता है और दूसरा मसलने वाला है, दोनों ही हमारे इंस्टीट्यूट में है। तो एक बार अच्छी तालियों से हम स्वागत करते हैं आदरणीय प्रोफेसर कुंडू सर का। So thank you Pankaj Phool. So I am delighted to be present in this occasion. It is not the occasion of superannuation, I would say, of 2 of our institute very important person. One is Pankaj Bahadur and Sukhdev ji. But I would say this is the day we acknowledge. Am I audible? Am I audible? पंकज, आई एम ऑडिबल? एक बार तालियां बजा करके सूचित करिए कि सब लोग सुन रहे हैं सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, एकदम क्लियर। ओके, सो आई एम डिलाइटेड टू बी हियर एंड इट इज नॉट द डे फॉर दैट वी आर सेइंग दैट दे आर सुपरएन्युएटिंग and that is what we are together. Rather, I would say this is the day we got an opportunity to say both of you thank you very much. And CDRI, rather the CSIR organization, will remember your contribution. Firstly, I would like to say a few words about Pankaj Bahadur ji. We worked together only for 6 months at the fag end of my period in CDRI, but it was a memorable experience. And I remember both Professor Vishwakarma and Professor Srinivas Reddy told me that you are lucky that you are getting Pankaj Bahadur in CDRI. And indeed, I took
2 weeks time to understand him, I must say that. But after that, I got a wonderful, I would say, the guidance, service, and care to both CDRI as a whole and myself. So I am grateful to you, Pankaj, and I'm sure, along with other CSR institute like CMAP and IIIM, CDRI also grateful to you. You know, the point I would very much would like to echo with Professor Ram Vishwakarma is that the honesty, integrity, managing the crisis period, decision making, and first and foremost is how to write a note, how to analyze every words. This is something, you know, I have learned from him. And I found that it is like so important in administration that sometimes it's actually crosses the need of the scientific language and the scientific data presentation. So it was indeed a great experience to work with you. And I must say that the last phase of any director is very, very critical, because last phase you get many work to be done, your immunity comes down, and also there are many unfinished things comes in front of you. So which one to do, which one not to do, which one to give the priority, which one to finish, and also how to protect yourself at that moment. And especially when an academician like us become the director, we are not very self-managing people. We cannot do that. So at that moment, a person of stature, intelligence, integrity of Pankaj Bahadur is so important that, you know, one has to be really fortunate to have him in the aside at that moment. And last 6 months we have done many things. COVID complicated all the directors' life terrible. Some of us, like Prabodh, you know, got a severe infection and came out because of his, you know, strength and his blessings of parents and love of Ritu. Some of us, those who have got mild infection maybe, but we manage the institute, and CDRI, they excel along with the whole CSIR during the COVID period. And some of the people like Pankaj Bahadur has tremendously contributed in that. So I wish all the best for him, a very healthy life and happy life. I wish his apartment gets completed now, and promise him that I will have a dinner there with you, Pankaj, because your house is not complete because CDRI did not allow you to do so. And another thing I must say, that any of us have any opportunity anywhere, we should see that at least another 1 decade, we get person like Pankaj Bahadur in the system. We need to get, he has many things to give to the system, and we should keep him in the system, get his advice, get his guidance. So all the best. सुखदेव जी, आपको तो क्या बोलूं मैं, कोविड पीरियड में जो क्राइसिस आया था, बार बार वो मेस क्लोज करना पड़ा, खुलना पड़ा, आपने एक नीरव कर्मी के तरह आपने हमारे सारे को जैसे खिलाया पिलाया, पानी पिलाया. सो आपने जो केयर लिया हमारे स्टूडेंट को, फैकल्टी को, कभी कभी बिग मीटिंग को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपका बहुत आगे आने वाला दिन सुखी हो, शुभ हो, ये प्रार्थना करता हूँ. और at this end, I thank CDRI to connect me in this function,
and I always say सारे जहां से अच्छा CDRI हमारा. I'm sure आने वाले दिन में we all are with CDRI and CDRI will progress. And Pankaj ji, I'm sure CDRI will get you all along. Thank you very much. थैंक यू सर. सर के रिटायरमेंट के बहाने हम लोगों को आपको दोबारा सुनने को मिला और आपने अपना कीमती वक्त हम लोग को दिया. आपका सर जो भी आप कहते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में और लगता है कि काफ़ी अनुभव से आप सब कुछ बोल रहे हैं. तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जैसे कि विश्वकर्मा साहब ने कहा कि सर के नोट में कोई लेटर में कोई कॉमा या फुल स्टॉप की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है. ऐसे ही मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगी. जब जैसे सर ज्वाइन करने आए तो मैंने सर का ज्वाइनिंग सब पूरा बना के फर्स्ट टाइम सर के टेबल पे रखा. सर के टेबल पे गया, सर ने कहा इसमें ज़रा सा यहाँ पे ये कर दो. एक बार ले गए, फिर दूसरी बार ले गए, तीसरी बार फिर सर ने कुछ करेक्शन किया. तो मुझको लगा अब सर से इनसे तो मतलब काम लेना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा. कैसे सर से कोई नोट अप्रूव होगा, कैसे सर से कोई लेटर साइन कराएंगे. लेकिन धीमे धीमे पता चला कि सर को किस तरह का काम चाहिए. तो हम लोगों ने कोशिश करा कि सर को उस तरह का काम दें, लेकिन जितना ही अच्छा करके ले जाएं सर की नज़र हमेशा गलती पे ही जाती थी. यहाँ पे देखो ये गलत, यहाँ पे ये गलत. लेकिन हम लोगों को अब थोड़ा सा वो लग रहा है कि अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं कि सर नहीं रहेंगे तो कैसे काम होगा, क्या होगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए. अभी तो हम लोग ने काम किया, सर हैं देखने के लिए, सर देख लेंगे. तो सर हम लोग आप लोग को बहुत याद करेंगे आपके इसके लिए. अब मैं डायरेक्टर CMAP सर को आमंत्रित करूँगी कि वो भी 2 शब्द हमें कहें. थैंक यू. Thank you very much. I hope you can hear me. Yes. Yes. Like it's really nice to meet Dr. Ram Vishwakarma and Professor Tapas here today when we are like saying bye-bye to Pankaj ji. It was really nice meeting Pankaj ji. I have long association with me. I think in '89 when I joined as a PhD scholar, he was in establishment section in NBRI. So we grew together. And after that, he was administrative officer in NBRI, and we had several times discussions on different policy matters. Yes, sometimes there was differences, but maybe those were because of his he was always with the institute and for the institute. And sometimes scientists have their own things and they make clash with the administration. And he has always been, as Dr. Ram Vishwakarma said, that he was real asset for the director. I will say yes, that is really true. He has been a real asset for the director as well as for the institute. So it was really nice, and I could connect today's function. I thank Pankaj ji for inviting me and asking me to join because of this long association. So I wish Pankaj ji as well as Sukhdev ji, though I don't know him, I really got chance to meet him, but I wish both of them good and sound health as well as healthy life in near future as and always. Thank you very much. बहुत आभार सर, निदेशक CMAP आदरणीय प्रबोध त्रिवेदी सर का. और बहुत सारे किस्से सुनाए जा रहे हैं यहाँ पर COA साहब के. एक बार मुझसे बता रहे थे कि बता के सबको पता ही है कि बारिश हो रही थी और इनकी गाड़ी ख़राब हो गई. कट्टर ईमानदारी का क्या हो सकता है उदाहरण. गाड़ी ख़राब हो रही थी, गाड़ी ख़राब हो गई, बारिश हो रही थी, गाड़ी लेके अपनी नहीं जा सकते थे, तो पंकज बहादुर जी ने ऑफिस की गाड़ी मंगाई. ऑफिस की गाड़ी से CDRI आए, वापस अपने घर गए और उसके बाद आने जाने का जितना बिल होता था इन्होंने ऑफिस में सबमिट किया. ये ईमानदारी के एक उदाहरण. चाहते तो ना भी करते क्योंकि ऑफिस की गाड़ी थी, लेकिन आपने बिल सबमिट किया और ये साबित किया कि देखिए मेरी गाड़ी अगर ख़राब हुई, मैंने ऑफिस का पैसा यूज किया तो मैंने उसका पेमेंट भी किया.
ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसे कुछ संस्मरण, और उनके साथ बहुत एसोसिएशन उतना ज़्यादा तो नहीं रहा रश्मि राठौर जी का, लेकिन जितना रहा है बड़ा सुखद रहा है, बड़ा यादगार रहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ एओ साहब के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए श्रीमती रश्मि राठौर जी को। थैंक यू पंकज। रिस्पेक्टेड सर्स एंड फ्रेंड्स, सर के साथ मैंने लगभग 4 महीने 10 दिन काम किया है, लेकिन ये जो 4 महीने थे ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेके आए। सर एक बहुत ही सीजन्ड ऑफिसर हैं, और आज सर जब सुपरएनुएट हो रहे हैं तो मतलब हमारे प्रशासन का जो मुखिया रिटायर हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर से छत जा रही है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, फाइल से हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हमें पता है कि 1 स्टॉप सॉल्यूशन है, हम जाएंगे सर के पास में, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अब ये मुझे सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही है, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि हाँ, कि किस तरह से आगे काम करना है। और सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो नंबर 1 तो सर से मैंने जो क्वालिटी सीखी है कि पेशेंस, कि आप फाइल में जितना पेशेंस से काम करेंगे उतना ही उसमें क्वालिटी आएगी और परिपक्वता आएगी। वो डिसीजन और वो जो उसमें आपका आउटपुट आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और जो आगे जाके काम होंगे वो उतने ही क्वालिटेटिव होंगे। और सर जैसे विश्वकर्मा सर ने कहा कि जो कोर्ट्स में ऑर्डर्स गए वहाँ पे वो डिफेंड हुए, तो सर की जो ड्राफ्टिंग है ना, वो पेशेंस और ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी है ना, सर एक एक शब्द ऐसे सेट करते हैं कि हमने सर की जो ड्राफ्टिंग बहुत क्लोजली देखी है और बहुत सीखा है कि एक एक शब्द का मायना क्या होता है और उसको कैसे ड्राफ्टिंग में फिट करना है। और दूसरा, जो सर पूरे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा साथ लेके चलना, हर आदमी से, हमारे हर एम्प्लॉई से कि कैसे उसका आप बेस्ट निकाल सकते हैं, कैसे आप इंस्टीट्यूट के लिए बेस्ट काम उससे करवा सकते हैं। और फाइलों पे किसी से कहीं ऐसा नहीं है कि किसी से पर्सनल कहीं कुछ हो गया तो फाइल पे निकलना, नहीं, वो पूरा न्यूट्रलिटी है। फाइल उसका फाइल जो काम है वो काम जो फाइल डिमांड करती है, जो काम होना चाहिए वो होगा, नहीं होना चाहिए नहीं होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सर को जानते हैं, सर को नहीं जानते हैं, नहीं। तो ये पूरा रूल्स और सर का नॉलेज बहुत अच्छा है। और इसके साथ सर के साथ मैंने जितना काम किया है, विजिलेंस की महारत है सर को, तो मैं थोड़ा बहुत सीख पाई। और इसके साथ सर की फैमिली में मैम हैं, और सर के जो बच्चे, सर फैमिली से बहुत संतुष्ट हैं, और सर के बच्चे हाईली अचीवर्स हैं, अचीव कर रहे हैं। और सर को मैं विश करती हूँ कि पोस्ट रिटायरमेंट आपको बहुत हेल्दी लाइफ रहे। आप सर जितना मेहनत से आपने काम किया है और आप उतना ही लाइफ को एंजॉय करें। और सर आपसे जो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, ये हेड ऑफ़ द ऑफिस की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो मेरे लिए इतना कठिन नहीं था, लेकिन ये जो बैटन है ये मुझे आप दे रहे हैं, इसलिए ये और भारी हो गई है, क्योंकि आपने इतने बड़े जो पैमाने सेट किए हैं ना, मुझे उनके साथ आगे जाना है। तो इसीलिए सर मैं आपके लिए विश करती हूँ, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और थैंक यू। थैंक यू एओ मैम। मैम ने जैसे भी सर का कहा, तो वही मैं सर के लिए कहना चाहूँगी। कुछ शख्सियत, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो शाब्दिक परिचय से परे हैं, और सर के आगे जितने भी विशेषज्ञ जोड़े जाएं वो सब कम हैं। तो मैं अब इसी के साथ ही पहले सुखदेव जी के लिए बोलने के लिए सरिता मैम को बुलाना चाहूँगी। आदरणीय विश्वकर्मा सर, निदेशक महोदय, सीनियर सीओए, एफएओ सर, सभागार में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार करती हूँ। और सुखदेव जी हमारे बीच आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनके लिए जैसा कि विश्वकर्मा सर ने भी बोला, और मैं ज़्यादा कुछ क्या बोलूँगी, वो बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य करते थे। जो भी कार्य उनको दिया जाता था वो मेहनत से करते थे, कभी भी किसी कार्य के लिए मना नहीं करते थे। और हम सभी कैंटीन में जाते थे और खाना खाते थे और उनके कार्य को देखते थे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे,
तो सुखदेव जी के लिए उनके जो है 3 बच्चे हैं, तीनों सेटल्ड हैं, सभी की शादी हो चुकी है और मैं इनको जो है अब रिटायरमेंट के बाद अभी अपना घर बनवाएंगे और उसमें अपना मेहनत करेंगे और मैं आप दोनों लोगों को सुखद, समृद्ध, दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना करती हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ उस शख्सियत को जिसके बारे में बहुत सारा यहाँ पर लोगों ने बताया, बहुत सारे संस्मरण सुनाए। मैं चाहता हूँ कि वो खुद यहाँ पर आएँ और CDRI से जुड़े हुए आपके जो अनुभव हैं, जो आपके IIM जम्मू से जुड़े हुए अनुभव हैं, जो आपके NBRI से जुड़े हुए अनुभव हैं, वो यहाँ पर साझा करें। एक बार हम COA सर को आमंत्रित करना चाहते हैं, वो बाद में बुला लेंगे सर। अच्छी तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, COA पंकज बहादुर जी। Honorable Dr. Ramesh Karma, former Director CSIR-CDRI Jammu, with additional charge of CDRI Lucknow as well as IIP Lucknow, because इनका पूरा जो एड्रेस है वो पार्टली अभी खाली जम्मू से ही लोगों ने कहा, but also know that he has also had additional charge of director of this institute as well as Indian Institute of Petroleum, Dehradun. Dr. Professor Tapas Kundu, former director of CDRI, and now he is in Bangalore in a very reputed Department of Science and Technology Institute, who has just spoken. He was on the screen. Professor Dr. Prabodh Trivedi, director CMAP, and okay, Rajesh, you are also there. So people from Jammu are also here. Mr. Dikshit, how are you? Fine, sir. Okay, thank you. Okay. Which is on your time, sir. Okay, Dr. Kundu, you are back. I thought you are offline. Okay, thank you. Yeah. And Dr. Ravi Shankar, my friend Dinesh, FAO, my friend from canteen, distribute scientists, my dear friends, my family members, ladies and gentlemen, and my dear children. I'm totally humbled today. I thought I'm quite articulative, but today I really feel I'm not finding words how to reciprocate such things which have been showered on me, such blessings, such good wishes. I'm really fumbling, and I found no words how to express their gratitude. Really, I had worked for a long with Dr. Ramesh Karma in Jammu, and I had the opportunity to work with Dr. Tapas Kundu, who is now in Bangalore. Right now, he is joining from Bangalore actually at the DST Institute. So, I mean, it's very rare that you find high achievements and people down to earth in one, and that is Dr. Ramesh Karma. He has a very high achievement, but he is still a very humble man, a very simple man, but high on intelligence. So absolutely, I have learned so many things from him. He has tremendous qualities. In fact, and it's now my turn to say something for you, because I think I don't know how much I deserve, but you really deserve what I am saying. The best thing is in him that he reposes so much confidence in any person, without thinking whether what will happen if he is reposing faith in or trust in a person. If he gives back him something wrong, he is not worried about it. So once in Jammu, I asked him, how easily you put so much trust in a person?
Are you not scared if your trust is abused? What did he say? He said, see, I am reposing trust in him. If he betrays my trust, it is his problem. So in this world nowadays, you won't find a person like him. So I very cool, and he'll keep you so comfortable. I mean, he won't tell you ki, I mean, he may be knowing everything about you, but he will keep you so comfortable. So he has really, and his achievements, I'm not even competent to even say a single word about his achievement. Many people do not know. I mean, he has so much contributed during Corona days. He has really, his advices all over India has been considered and reckoned with. And because of his qualities, even after his superannuation, he has got an assignment which is even far better than assignment he had as a director, and he is now in a position which is and in a scale which is almost equal to the Secretary to the Government of India or Chief Secretary of the State. So I would request our audience to please give a clap to our Honorable Dr. Ram Vishwakarma, who had been really a source of inspiration for me. So thank you, and he has come all along from Delhi just to attend this function, and of course he had some other plans because he's a distinguished scientist. He's also mentoring CDRI. He's mentoring CDRI. So he made a plan in such a way, in spite of his health problem, he made a point and he had come here, and he has blessed us. So I'm thankful to you. I'm grateful to you, and I really salute your qualities. I wish we can also emulate the same. Secondly, what to say about Dr. Tapas Kundu, Professor Tapas Kundu, former director of this institute. We had really had a span of 6 months, I think nearly 6 months. But I don't know how it happened. We really developed so much cordiality. I was so happy, and I mean, he is such a democratic person. He will listen to everybody, and then he will take a decision. It's not that, okay, I won't listen to anybody. What I have decided, I have decided. He will listen very patiently, very carefully, and he really takes, others' decision, others' perspective, and then he takes decision. He's a very nice, very simple man, very, very simple man. And in fact, he told me when he came to know that some senior controller is being posted here, so he thought कि very बहुत पुराना आदमी होगा. I don't know how he will cope up with that person. So, but then later on he told कि when he met me, and after a couple of weeks he thought it's good. So we really had a very gala time, and he really had so much trust in me, and he gave me so much regards. I don't know I was whether worth for it or not, but he gave me so much of regards, and I did my best on my part. What was expected of me, I did it with all my sincerity, with all faculty at my command, all my wisdom. I did what I can do. So I tried to serve this institute as much as possible. So thank you. In fact, I'll tell you, he came a couple of weeks before and wanted to give me a surprise to say goodbye. So actually I was on leave. Then he said, okay, I'll try to come again on 29th. So unfortunately he cannot come, but he's saying he'll come next week or in a 10 day or 10 days. So just see, people coming from Bangalore just to say goodbye. I'm absolutely floored. I have no words to say. Thank you very much, Professor Tapas Kundu. And really, we really had a good time. I can now say in public also, we had really had a good time. And thank you for everything. Professor Trivedi, I think he had a meeting, Prabhuti Director's CMAP. So he had a meeting right now. In fact, he came 2 hours before. He came and he met me and he gave a gift from CMAP. So I had worked with him in NBRI, and we know each other for a very long time, 20 years or more. I'm especially thankful to him for coming all along from his institute
and sparing time and meet me personally, and now online here. So I'm thankful to him for sparing his time and speaking about me. I'm grateful to everybody. I'm so thankful to you. I had a good time here, although it was not a very, it was less than a year, but still, I thought sometimes small is also beautiful. I am really thankful to my staff, to all the distinguished scientists, and with whom I had developed some good relations, close relations. So thank you all for being here, and I'm thankful to Dr. Ravi Shankar. We had so many meetings. In every meeting we are together. We really take so many decisions after discussion, and he has been very, 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 very kind and very soft person, very good person. So my best wishes to you and to CDRI, my friend Dinesh and all my all staff, all technical officers, all staff. I'm thankful to everybody. As I would really like to seek pardon from some of the staff to whom I may have scolded several times, but they all know that if I have said anything hard, it was only in the interest of work, and they very well realized that it was nothing personal, but only in the interest of work I did that. So later on they have realized that, and now they say, sir, it was blessing. If your scolding was a blessing. So if they have realized it, I am grateful to them that they have bared with me for 9 or 10 months. In the end, I would wish a very good and a very bright future for this institute. As Dr. Tapas could always say that Sare Jahan se acha CDRI hamara. I also reciprocate the same. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे अच्छी बात है कुंडू सर CDRI से जाने के बाद भी ये नारा दोहरा रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा CDRI हमारा, तो वास्तव में बड़ी खुशी होती है। वो मन से इस चीज़ को कह रहे थे, वरना बेंगलोर में जा कर के शायद कहने लगते सारे जहां से अच्छा प्यारा बेंगलोर हमारा, लेकिन वहाँ रह के भी आप CDRI से कितना जुड़े हुए हैं, ये दिली लगाव की बात होती है। वहाँ जाके भी आप CDRI का ही झंडा ऊंचा कर रहे हैं सर। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ सुखदेव प्रसाद जी को कि वो आए यहाँ पर। नहीं, बोल दीजिए कुछ दो शब्द आज। अच्छा, वो कह रहे हैं कि रोटी खानी हो तो बताओ, अभी थोड़ा समय बचा हुआ है। बहुत मेहनत की इन्होंने। अब यहाँ मैं देख रहा था कि आज इनका रिटायरमेंट है, पार्टी है, फेयरवेल है, लेकिन आज अपने ही फेयरवेल की प्लेटें बाहर सजा रहे थे। तो कितना लगे हुए हैं अपने काम के प्रति कि भाई मैंने बहुत सारे लोगों के फेयरवेल की प्लेट्स हमने लगाई हैं, आज मैं खुद के फेयरवेल की प्लेट लगाने के बाद ही यहाँ पर डायस पे आऊँगा। ये इनकी कर्तव्य निष्ठा है, जिसके लिए इनको प्रणाम करने का मन पंकज जी एक फोटो खींच के रखो इसको। Just one line I would like to add. Actually, I just missed. I would really like to thank my family members also who have come here. And you see, whatever I have done here, it could not have been possible if I won't have got the support from my family. So actually, we should thank your family because they have sacrificed their life, and they have adjusted that. I know how much time you spend with all the directors. So I think on behalf of all the directors, thank your family. And I thank your wife, your children, that they have given you to the nation. Yeah, I'm so thankful. And now I can even confess, I'm really thankful to my wife especially, who has cooked so good food for me for last 33 years, because of which I have been able to work here. Had it not been there, maybe my energy would have been low and I would have not been able to work. So I'm extremely thankful to my better half, my wife, who really sacrificed, and every day she used to cook food for me. I mean, no, it's not required today. No, you take it, because she knew that I won't take anything in office. So you have to take it.
So I'm so grateful and so thankful to my wife that she has stood so steadfast with me side by side, and she has really allowed me to work in all CSI institutes, with be it Lucknow or Jammu or elsewhere. My regards to all my brothers, my sisters, and everyone, and incidentally my friends have also come, friends who we have been together with during last 50 years. The school days friends. In 1973 and 74 we met. We were in Christchurch together, and they are now very successful men of Lucknow. So I just missed this. Pardon for me. Thankful to all my family members. Probably a few are even listening on YouTube if it is being streamed directly live. So my brothers at Bombay and Delhi and elsewhere. So thankful to everyone in my family. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो आपसे छूट गई थी, क्योंकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, लेकिन घर का एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है, और किसी के पास नहीं होता है। हम किसी के पास नहीं होता है। घर हमेशा माँ चलाती है या फिर पत्नी चलाती है। घर का एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपने यहाँ पर शुक्रिया अदा किया, वरना अभी आपको घर वापस लौट के अब तो घर ही में रहना है। अब तो इंस्टीट्यूट में रहना ही नहीं, अब तो आपको लगातार घर में रहना है। तो मैं फिर से आप सबके प्रति, आपने जो खाना खिलाया है सर को, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ अग्निहोत्री सर को कि वो आएँ। CDRI कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की ओर से हमारे दोनों आज साथियों का अभिनंदन करें CDRI कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, और शाल उड़ा करके उनका स्वागत करें। सबसे पहले सीनियर COA साहब को शाल अर्पित करके उनका अभिनंदन अग्निहोत्री जी करेंगे, और हम ताली बजा करके स्वागत करेंगे। इसके बाद सुखदेव प्रसाद जी को शाल अर्पित करके हम उनका भी सोसाइटी की तरफ से उनका अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा FAO सर साहब से कि कृपया पेंशन के प्रपत्र भी सौंप दीजिए, और इसी क्रम में ये वहीं से खड़े खड़े कर दीजिए। पेंशन के प्रपत्र सबसे पहले सीनियर COA सर पंकज बहादुर जी को उनके सुखी आर्थिक जीवन की कामना करते हुए उनको प्रदान किए जा रहे हैं। इसके बाद सुखदेव प्रसाद जी को उनके सुखी आर्थिक जीवन की कामना करते हुए पेंशन के प्रपत्र उनको सौंप रहे हैं दिनेश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में इस मंच पर मौजूद आदरणीय रविशंकर सर को कि वो आएं और अपने आशीर्वचन से हम सबको नवाजें, और जो भी संस्मरण आपके हैं वो साझा करें। आज एक सेलिब्रेशन है, जश्न है टू अ कैरियर स्पैनिंग मोर देन 30 years, 33 years, superb. And आज it is also very momentous today that probably as the sun sets on his career, we will have the first lady head of the administration of CDRI. I think. Welcome, ma'am. I think this is a momentous day again. एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। आप कह रहे थे कि बहुत सारे मीटिंग्स में हम लोग साथ थे, तो एक उदाहरण के तौर पे ये बोलना चाहता हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमेशा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोक करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ मैंने देखा कि जितनी भी वो क्रोधित होके अगर हम कुछ बोल रहे हैं, मीटिंग्स में हो रही है, शांत बैठेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे और सोल्यूशंस देंगे। तो दिस इज़ वन क्वालिटी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ संस्था, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी गुस्सा करती है, साइंटिस्ट भी गुस्सा करते हैं, तो कहीं नहीं होगी। और सुखदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। 42 साल आपने हम सब की तरफ से हम धन्यवाद कहते हैं। अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल, अच्छी पेट्रोल। अच्छा खाना लीड्स टू दिल में गाना एंड विज्ञान बढ़ाना।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शब्द से मैं धन्यवाद बोलता हूँ आप सबकी तरफ से हमारे दोनों साथियों को धन्यवाद। और आगे थैंक यू सर। अब मैं फ़ोटोग्राफ के लिए सर के फैमिली से मैडम और उनके जो बच्चे आए हैं उनको आमंत्रित करूंगी ग्रुप फ़ोटोग्राफ के लिए। और जो लोग भी खिंचाना चाहते हैं सर के साथ फ़ोटो वो आ जाइए। आइए मैम, डिपार्टमेंट के लोग जो भी आइए। हाँ हाँ आ जाइए। क्षमा फोटो खिंचाने आओ मैम। एओ मैम सर के जो फ्रेंड्स आए हुए हैं वो भी अगर चाहते हैं फ़ोटो खिंचवाना तो प्लीज़ आप भी हाँ हाँ आ जाइए सर, आ जाइए। आप कटेंगे नहीं, आप निश्चिंत रहिए। आ जाइए सर। मैडम आपको भी और कैंटीन से भी जो लोग आना चाहते हैं अगर अभी तक नहीं आए तो आ जाए। सुखदेव जी के साथ में हैं? अच्छा वो लोग पीछे हैं, आप लोग हैं पीछे हैं, यहाँ पे खड़े, यहाँ बैठे तो हैं। कैंटीन विभाग से भी लोग यहाँ पर जो आना चाहते हैं कृपया आ जाइए। ये सब बाहर सेवा में लगे हुए हैं। तो पांडे सर, हाँ पांडे सर खुद आएंगे। हाँ जी, रामजीत जी भी आ रहे हैं। ये तो इन्होंने सबको भोजन खिलाया है, तो पूरा CDRI ही इनका परिवार है। पाल पोस के बड़ा किया है। 42 साल बहुत समय होता है। कितनों को तो इन्होंने पाल पोस कर डायरेक्टर से लेके और प्रोफेसर तक बनाया है। चार पंक्तियां आपके लिए कहना चाहता हूं चाय से पहले कि आए हैं, रहना भी है, खोना भी है, पाना भी है। आए हैं, रहना भी है, खोना भी है, पाना भी है। जिंदगी की इस कहानी से निकल जाना भी है। और हम कोई ठाकुर नहीं जो कह दिया सो कह दिया, या हम कोई बहादुर नहीं जो कह दिया सो कह दिया। हो गया तो ठीक है, वरना मुकर जाना भी है। जिंदगी इसी का नाम होती है। सहजता, सरलता और तरलता से जीवन यूं ही चलता रहे और यूं ही हंसी आपके चेहरे पर बिखरती रहे यहाँ से जाने के बाद भी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी को चाय के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। जो भी अतिथि हमारे साथ आज जुड़े सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।
Pankaj ji? Pankaj ji?